Okay, so CPC examination pattern. Okay, so in this topic we will see what is CPC, that is Certified Professional Coder. Okay, now what is CPC? It is the examination conducted by AAPC, that is American Association for Professional Coder. ओके सो पहले भी हमने देखा है लेके ए CPC कंपलसरी है टू गेट अ जॉब इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओके सो what is this CPC and AAPC? So this is the AAPC website, that is American Association for Professional Coders. Okay, so this is the US body, okay, US institute that conducts the medical coding examination all over the world. Okay, so if you see, these are the books that are the required for the CPC exam. If you see, like ICD-10 CM, CPT and HCPCS. Okay, so these are the three just books that are required for this examination. Then so there are different level of certifications that AAPC conducts. Okay, so first, like there are a lot of certifications like CPC, that is Certified Professional Coder. It's the most popular and it's mostly preferred by the freshers. Okay, so अगर आपको job चाहिए medical coding industry में, you have to do this CPC certification. Okay, as a fresher, to get a job as a fresher. Okay, now there are a lot of other certifications that AAPC conducts, okay, such as CPB, it is for medical billing, so this is Certified Professional Biller. Then there is a CRC, it is for Certified Risk Adjustment Coding, so this is for HCC coding only. Okay, ये सिर्फ मेडिकल बिलिंग के लिए है. Then COC, it is for Certified Outpatient, means only for outpatient coding. CIC is for only inpatient coding. Okay, so CPMA is for the auditors, like हमने medical job roles में देखा था, like QAs, quality auditors. So this CPMA is for the Certified Professional Medical Auditors. Okay, so this is for the Revenue Cycle Management Specialist. Revenue Cycle Management मतलब जो US में हॉस्पिटल से उसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए. Then we have these other certifications, okay, like compliance officer or outpatient certification and all. So there are a lot of other certifications. So there are more than, I guess, 40 plus certifications that are available. But CPC covers everything. Okay, so CPC certifications covers all other certifications. So it is like a gold standard certification, and this is internationally recognized. मतलब you can work on the same certification in US, Dubai, Australia or any other country. Okay, so we'll learn more about this CPC certification. So this is credential, and it is the exam and everything will be covered by the AAPC. Okay, so here like we will see what is the CPC exam pattern. So it is a offline exam center. Okay, so this examination like आपको एग्जाम सेंटर में जाके देना पड़ेगा. ओके, सो उसके अलग अलग एग्जाम सेंटर्स है, लाइक इन मेजर सिटीज दे हैव द एग्जाम सेंटर्स लाइक हैदराबाद, देन चेन्नई, बैंगलोर, नोएडा, okay, Delhi, Indore, I guess. So in Maharashtra they have the exam centers at Pune, Mumbai and Sambhajinagar. Okay, these are the three locations available in Maharashtra. So ये एग्जाम कैसे रहता है? इट इज़ अ फर्स्टली ओपन बुक एग्जामिनेशन. ठीक है, इट्स नॉट लाइक आपको सब याद रखना है एंड नॉट लाइक दैट. ठीक है, इट्स नॉट लाइक योर कॉलेज एग्जाम्स. ठीक है, सो इट्स अ ओपन बुक एग्जामिनेशन बिकॉज बुक्स में जितने भी कोड्स है यू कैन नॉट रिमेंबर द कोड्स, राइट. देन इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो उसमें एग्जाम में ओपन बुक एग्जाम है. सेकेंडली इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो इसमें 100 MCQs रहेंगे एंड जो टाइम है इट इज़ 4 hours. ओके, एंड द पासिंग क्राइटेरिया इज द 70%. सो आउट ऑफ 100 MCQs 70 MCQs शुड बी करेक्ट. ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है कुछ. एंड नेक्स्ट इज 2 एग्जाम अटेम्प्ट्स आर अवेलेबल. ठीक है, सो इन केस इफ यू फेल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट in the CPC exam, you will have a free of cost second attempt.
ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट आपको देना है, सो यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट. Okay, but if you fail for second time you have to pay for the additional 2 attempts. ठीक है. So इस CPC exam it is offline conducted at the exam centers. It is open book exam. It is multiple choice based and out of 100 MCQs 70 MCQs should be correct. उसमें 2 एग्जाम अटेम्प्ट रहते हैं. सो उसमें सिलेबस क्या रहता है? सो आउट ऑफ 100 MCQs अराउंड 8 जो क्वेश्चन है इट इज फॉर द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजीज. ओके, जो ह्यूमन एनाटॉमी है सो उसके लिए अराउंड 8 मार्क्स है. कंप्लायंस एंड ऑल इट इज फॉर 3 मार्क्स. ओके, एंड जो रिमेनिंग मार्क्स है इट इज फॉर द मेडिकल कोडिंग रिलेटेड नॉलेज. ठीक है, उसमें अलग अलग बुक्स है लाइक ICD, CPT, HCPCS. सो उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है. So this is like a exam question like AAPC CPC exam. So they'll have a question, they will have the options, and again you have to select the correct codes like A, B, C, D. Out of these 4 options, you have to select the correct option. So यहाँ पे अलग अलग codes दिए हैं. Okay, so for example this J18.9 this is for the pneumonia. ठीक है, so R05 it is for the cough, R062 it is for the shortness of breath. Okay, सो यहाँ पे अलग अलग कोड्स हैं तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बुक में जाके कि ये कोड सही है या फिर ये सिर्फ कोड्स करना है. सो बेस्ड अपॉन दैट विल सिलेक्ट दिस क्वेश्चंस. ओके, सो यहाँ पे सर्जरी के कोड्स है. ठीक है, यहाँ पे आई लीड एक्ससाइज हुआ है. ठीक है, आई लीड का सर्जरी हुआ है, इंसिजन हुआ है. सो उसका हमें करेक्ट कोड सर्च करना है. ओके, यहाँ पे एंड वी हैव टू गिव दैट. ओके, then we'll have some true or false or full form questions as well. Okay, then this is the anatomy question, so anatomy is also for 8 marks. So all these type of questions will be there. So CPC is not that easy and it's not that much difficult. Okay, so ये जो भी एग्जाम है it's open book. Still you require the training, you require the knowledge and you require the practice. Okay, then only you can crack this examination. ठीक है, so CPC examination it's must if you want to get the job in the medical coding. Okay, so we'll talk about CPC in the later at the last stage of this course. Thank you.